Hello everyone and welcome back to yet another lecture of electronic measurements and instrumentation. In previous lecture we discussed about the operational amplifier voltmeter circuits, how we can convert the voltage into current and then measure it using a voltmeter. And then we started briefly discussing about the ohm meter. In ohm meter circuits we started with series ohm meter circuit, where what we need is a voltmeter, a battery, a series resistance and an unknown resistance connected in parallel with the voltmeter. And we could also change the range of the ohm meter by changing the multiplier resistance, and when we do that we can also change the range of the ohm meter. Now today we will continue with an example based on the same topic, and then we'll be starting with a shunt ohm meter, where we are going to use parallel resistances, and then we are going to study about linear ohm meter, because the ohm meters circuits, or the ohm meters that we would have discussed before this, were all having a non-linear scale. So a linear scale ohm meter we would be studying, and then we'll also be studying about electronic voltmeters that measure AC. That means we are going to connect some rectifier circuit somewhere in the meter so that they will also be able to measure the ACs. So now to continue with the previous lecture, we'll do an example based on the same circuit. So first we are going to draw the same circuit so that we will be able to do the example based on that. So we will connect a 1.5 volts battery. Along with that we will connect some series multiplier or standard resistances that we said. Then we will connect the unknown resistance to be measured, say Rx, and then we will have a voltmeter connected in parallel with the unknown resistance. Also the voltmeter range is 1.5 volts, which is actually the voltage being provided by the battery. Okay, so with the question, for this circuit, if we have to determine the resistance scale markings at one third of the deflection meter and 2/3 of the full scale. Okay, so statement of the question is, for the above circuit, determine the resistance scale markings at 1/3 and 2/3 of full scale deflection. Okay, so for example we are connecting it here on 1k standard resistance range. So instead of this connecting here, it is connected to 1k. Okay, so we'll neglect all these above resistors, we'll just keep 1k in mind, and unknown resistance is connected along with it. We have to determine, say this is the scale. Okay, so this is 1/3 of the scale marking, and this is 2/3 of the scale marking. This is 0 and this is full scale deflection marking. We have to find what is the value of resistance here and what is the value of resistance here. In between, what is the value? So how are we going to find the value? Is we already know from the equation, अगर हमें यहाँ पे unknown resistance निकालनी है, तो that unknown resistance value is equal to how much?
We know, say, E is the voltage here, EB is this battery voltage. So we know that this EB will be potentially divided across this resistance of 1K and this unknown resistance, or we can say according to the voltage division rule, this voltage E will be equal to total voltage times Rx divided by Rx plus R1. Say R1 is the series resistance. Now in this case we have to find out the value of Rx, so we need to first find out the value of Rx. So in other words, if we have to find out the value of Rx, so Rx plus R1 times E is equal to EB times Rx. Okay, so keeping Rx terms on one side and EB on other, say I'll write ERX plus ER1 is equal to EBRX, or ER1 is equal to EBRX minus ERX, or I can say ER1 is equal to Rx times EB minus E, or Rx is equal to ER1 divided by EB minus E. Okay, so this is the expression for calculating the any unknown value of Rx. So all other values are known. We know the value of R1, E and EB. EB जो बैटरी की वोल्टेज है, E है जो भी है ये वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर कर रहा है. अब वोल्ट मीटर में दिखा रहा है कि 1/3 ऑफ द डिफ्लेक्शन है. इफ द दिस इज शोइंग 1/3 ऑफ द डिफ्लेक्शन, दैट मीन्स E is equal to 1/3 of EB. Obviously say this is equation first जिसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं. So E is shown to be equal to 1/3 of EB. Okay, so or we can say also EB is equal to 3 times E. Okay, we can substitute this value here if we put it here. So Rx will be equal to E R1 divided by EB का value we already know, thrice E minus E. Okay, so Rx will be equal to ER1 by 2E. Okay, so E and E will cancel out, so Rx will be equal to R1 by 2 or 0.5 times R1. So इस जो भी R1 का वैल्यू होगा, अगर R1 1K है, so obviously this value is going to be 500 ohms at 1/3 of the deflection. Okay, so similarly for 2/3 of full scale deflection, what will happen is obviously E will be equal to 2/3 of the battery voltage, and the same we are going to substitute in the previous equation where Rx is equal to ER1 divided by EB minus E. Okay, EB's value is equal to, EB can be written to be equal, EB will be equal to 3/2 of E. So we'll write 3/2 E minus E, that will be equal to ER1 divided by twice 3E minus E will be equal to E only, so it will be twice ER1 by E, that will be equal to twice R1. So Rx will be equal to twice R1. So obviously अगर R1 हमारे पास 1K है, तो this will be equal to obviously 2K, 2 kilo ohms. So that is how you are going to do it. If the value of R1 is known, if the value of R1 is not known, you can write it in terms of R1 only, and that will do. Okay, so this is how you calculate the value of unknown resistances anywhere.
So you can calibrate the scale once you are done. So once the value of R1 is known, you can find out all the other values of the resistance. So this was doing fine. This ohm meter is fine as long as the battery voltage that we are connecting in the circuit with remains 1.5 only, या अगर हमने 3 volts की बैटरी ली है और वोल्ट मीटर को 3 volts की रेंज पे रखा हुआ है, तो इन दैट केस जो भी बैटरी की वैल्यू है वो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू रहनी चाहिए. In case that obviously the battery is going to discharge after a point of time, that is not going to remain the same. तो क्या होगा उस केस में, हमारे पास एरर आ जाएगा. से इफ ई बी इंस्टेड ऑफ बीइंग 1.5 volts it is around say 1.4 volts discharge. Okay, so in that case we can have a faulty value of the resistance that we are measuring. Even that can be overcome अगर हम से जब ये बैटरी से डिस्चार्ज हो गई और ये 1.4 हो गई, सो उस केस में क्या होगा, वोल्ट मीटर के साथ हम सीरीज में एक रेजिस्टर कनेक्ट करते हैं RS और उसके वैल्यू को चेंज करते हैं एज लॉन्ग एज जो हमारा वोल्ट मीटर है ये मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन दिखाएगा 1.4 वोल्ट्स पे. जब ये ड्रेन हो गई टू 1.4 वोल्ट्स तो हमारा जो ये मीटर है ये भी हम दिखाएंगे 1.4 वोल्ट्स पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए. हाउ, जब हम इसको शॉर्ट सर्किट करेंगे इन दैट ओपन सर्किट करेंगे, इन दैट केस दिस शुड शो यू अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू ओनली. बट उसमें दैट ऑब्वियसली फिर बैटरी सेम नहीं रहेगी, फिर और डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर वी नीड टू डू दोज एडजस्टमेंट्स अगेन. सो द कैलिब्रेशन कंट्रोल इज डिफिकल्ट इन केस ऑफ an ohm meter like this. The resistance the resistance that we are measuring, हमारे पास कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, या तो हमारे पास एक हमें कांस्टेंट डीसी सप्लाई उसको या फिर स्टेबल सप्लाई प्रोवाइड करनी है जो ड्रेन ना हो, जैसे हमारे लेबॉर्ट्रीज में होती है, या तो हमें वो करना है, या तो वी हैव टू फाइंड दी अनदर वे आउट. इसमें एडजस्टमेंट ज़ीरो एडजस्टमेंट्स भी बार बार करनी पड़ती है, यानी कि एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ डिफरेंट बैटरी और समथिंग, इन दैट केस यू नीड टू डू द फर्स्ट टू रीडिंग्स. यानी कि जब आप बैटरी को जब आप रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट करते हो तो इट शुड शो यू अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन. जब आप शॉर्ट सर्किट करते हो देन इट शुड गिव यू अ ज़ीरो रीडिंग of the resistance obviously. So these two readings are must in case of a voltmeter. This can be overcome by using another type of ohm meter rather, that is called as shunt ohm meter. So let me just first draw the diagram for the shunt ohm meters for better understanding. It consists of two precision resistors R1 and R2. Then the unknown resistance is connected in parallel with resistance R2. So this is Rx. And the voltmeter is connected across this resistance Rx. The input voltage at these two terminals is 6 volts. Okay, the value of this resistance is 4 kilo ohms and the value of resistance R2 is around 1.33 kilo ohms. This resistance being unknown, and the voltmeter is again set to a range of 1.5 volts. These two resistors are called precision resistors because they are precisely of these values, which is 4 kilo ohms and 1.3 kilo ohms. They are connected like this. So obviously since they are connected, keeping this apart, these two are connected in series obviously, so the voltage of this 6 volts will get divided across these two. If I have to find out the voltage across resistance R2, that means that will be equal to 6 volts into whatever is the resistance of R2 divided by R1 plus R2. So that will be equal to 6 into 1.33 divided by 4 plus 1.33 will be 5.3.
33. If that value is calculated, so that will be around 5 volts. So this voltage will be across this resistance, so maximum voltage here is 1.5 volts, remaining voltage of 4.5 volts is here. Okay, so in this case we use a stable 6 volt supply. So that means since we are not using a battery here, we are using a stable 6 volt supply. This battery won't get discharged. Since battery is not used, the voltage will remain stable at 6 volt. It will not become less or higher than 6 volts. Also, these resistors will precisely divide this voltage of 6 volts into 4.5 volts and 1.5 volts. Since the maximum voltage coming across the resistance R2 is 1.5 volts, the voltmeter that we are using will have a range of 1.5 volts. So again we can have here the scale readings given as such. So in this case obviously हमें full scale deflection value निकालने की ज़रूरत नहीं है, only zero deflection के लिए हमें चाहिए. Whenever the input here now since this battery voltage does not drop, we do not have to do any other calibration apart from the fact that when this resistance, say it is open circuited, Rx is open circuited, so it will have the maximum voltage of 1.5. that we already know. We do not have to do this calibration because whenever we put it equal to 0, whenever we open circuit it, we know that this is precise resistor and it will give you 1.5 volts of voltage, and you can measure it using this voltmeter having a range of 1.5 volts. When this resistance Rx is short circuited, that means points A and point B is short circuited, whatever voltage it will measure, that will be 0 volts. So if we have to take the scale of this voltmeter, for 0 voltage maximum voltage will be 1.5 volts, and on the upper hand we can have the resistance value. So resistance changes like this. For 1.5 it will be open circuited, that means resistance is going to be infinite, and for short circuit resistance means 0. For any in between value of the resistance, we can find that by using the value of the voltage. Obviously this voltmeter is going to measure what? The voltage E across this resistance Rx. So E will actually be equal to the total voltage of, or the precision voltage of the battery, EB. Okay, then R2 parallel to Rx divided by R1 plus R2 parallel to Rx. So this is for any value of R which is less than infinite and greater than 0. For any value of this, your voltage will be EB times R2, whatever is the parallel combination of this total, what is the supply voltage EB, times parallel combination of R2 Rx, because around this the voltmeter is connected, divided by R1 plus the parallel combination of R2 plus Rx. When we have these values, we can determine the intermediate values of this scale. Also, whatever is the scale reading of this scale reading, it gives you a range of 1 kilo ohms range. Okay, that means R1 plus R1 and R2, if R1 is 4 kilo ohms and R2 is 1.33 kilo ohms, the range of the ohm meter is 1 kilo ohms. If we multiply it by a factor of 10, that means R1 say is 40 kilo ohms and R2 is say equal to 13.33 kilo ohms. In that case the range will be 10 kilo ohms. Similarly, जो आप जिस फैक्टर से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, उसी फैक्टर से आपकी ओम मीटर की रेंज भी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, अगर आप इसको डिवाइड बाय 10 करोगे, ऑब्वियसली ये 100 ओम रेंज में आ जाएगा ये ओम मीटर, एंड लाइकवाइज.
ऑल्सो इसको शंट ओम मीटर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्रीवियस केस में जो हमारी सप्लाई के साथ हम रजिस्टर्स कनेक्ट करते थे वो हम सीरीज़ में कनेक्ट करते थे। यहाँ पे हम सप्लाई के साथ स्टैंडर्ड रजिस्टर्स जो है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ शंट ओम मीटर। ऑल्सो इसमें ज़्यादा कैलिब्रेशन की नीड नहीं है, मोर एक्यूरेट है बिकॉज सप्लाई वोल्टेज जो है वो स्टेबल है, ड्रॉप नहीं करती है और उसके बाद हमें हर बारी कैलिब्रेट नहीं करना पड़ता है। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ शंट ओम मीटर, बट दीज एडवांटेजेस आर नॉट इनफ। वाई? बिकॉज दिस स्केल इज़ अगेन नॉट लीनियर। जैसे जैसे आप स्केल के एंड्स पे पहुंचते हो, चाहे वो स्टार्टिंग के एंड हो या लास्ट के एंड हो, स्पेशली जो लास्ट वाला एंड हो, उसमें बहुत सारे वैल्यूज़ एक सेक्शन में और एक डिवीजन में आ जाते हैं विच जो हम नेकेड आई से देख नहीं पाते हैं प्रॉपरली और डिसाइफर नहीं कर सकते हैं। सो उस केस में हम क्या करते हैं, यूजुअली वी नीड एन ओम मीटर विच इज़ लीनियर, जिसका स्केल जो है वो लीनियर होगा। सो नाउ कमिंग टू अनदर पार्ट ऑफ आवर today's lecture, which is linear ohm meter. So this is the circuit of a linear ohm meter. It consists of four resistances R1, R2, Re, which is a combination of two resistors. One is variable and one is non-variable. Then another resistance Rx which is unknown, जिसकी resistance हमें find out करनी है। Again इसको हम connect करते हैं voltmeter के साथ in parallel, okay, and it is there is a transistor, say Q1. It is a PNP transistor, so Q1 is a PNP transistor, that is why this arrowhead is inside of it. ओके, सो सप्लाई जो हम प्रोवाइड करते हैं थ्रू अ स्टेबल सर्किट, यानी कि ये वाली भी कांस्टेंट सप्लाई है या फिर स्टेबल सप्लाई है ऑफ 15 वोल्ट्स। रेजिस्टेंस R1 ऐसे कनेक्ट किया जाता है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज़ अराउंड 5.7 वोल्ट्स, एंड बाकी का जो 9.3 वोल्ट्स का सप्लाई है दैट इज़ अक्रॉस दिस पार्ट ऑफ द सर्किट। सो दीज टू resistors R1 and R2 are so selected that this 15 volts gets divided into 5.7 volts and 9.3 volts. So also across this junction there has to be a voltage drop of 0.7 volts. That means this portion of the circuit will have a drop of 5 volts. Okay, also this current that is flowing through here is IE. Current flowing through this circuit is IC. Same current flows through because the voltmeter resistance is very high, so negligible or no current flows through it, so the same current IC flows from here through Rx is IC. These three resistors R1, R2 and this Re, which is these two resistor combinations, variable and non-variable resistor, this form a constant current source. So R1, R2 and Re, they form a constant current source. How? पहले तो ये दो रेजिस्टर्स इसको इक्वली अनइक्वली डिवाइड करते हैं इनटू 5.7 और 9.3 वोल्ट्स में। ऑलरेडी हम बोल चुके हैं इमिटर बेस पे ड्रॉप कितना होता है, VBE के अक्रॉस ड्रॉप है 0.7 वोल्ट्स। दैट मीन्स कलेक्टर वोल्टेज इमिटर वोल्टेज कितनी है यहाँ पे 5 वोल्ट्स। ठीक है, 5 वोल्ट्स यहाँ पे कॉन्स्टेंटली आ रही है क्योंकि रेजिस्टर्स के वैल्यू ये है, ड्रॉप यहाँ पे इतना होगा तो कॉन्स्टेंटली यहाँ पे 5 वोल्ट्स ही रहेगा। हमें रेजिस्टर्स RE के वैल्यू ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना, इसलिए वहाँ पे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। RE को हमें ऐसे सिलेक्ट करना है कि हमें IE का कोई कांस्टेंट वैल्यू आए। से अगर मुझे 1 मिली एम्पेयर की करंट चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स IE इज इक्वल टू से 1 मिली एम्पेयर्स, और हमें पता है दिस वोल्टेज इज इक्वल टू 5 वोल्ट्स। हमें ये भी पता है V इज इक्वल टू I into RE, so RE will be equal to V by I. V is equal to 5 volts divided by this is equal to 1 milliamperes, so that will be equal to RE is equal to say 5 kilo ohms.
ओके, सो आर ई का वैल्यू हमने 5 किलो ओम सेट किया। जब हम आर ई को वेरिएबल चेंज करके 5 किलो ओम किया तो यहाँ पे 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा और यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, 1 मिली एम्पेयर का। सिंस यहाँ पे बेस करंट बहुत कम है, आई ई इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू आई सी। अगर आई ई है 1 मिली एम्पेयर, दैट मीन्स आई सी भी कितना है, 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, से ये वोल्ट मीटर है, इसकी रेंज है, वोल्ट मीटर की रेंज है 1 to 5 वोल्ट्स, या सॉरी 0 to 5 वोल्ट्स में, यानी कि मैक्सिमम ये कितना मेजर कर रहा है आपका, 5 वोल्ट्स। ओके, सो नाउ अगर हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, हमें पता है इसके थ्रू करंट आ रही है सेम जितनी कलेक्टर के थ्रू करंट आ रही है, विच इज़ 1 मिली एम्पेयर्स, और से ये वोल्टेज मेजर कर रहा है वोल्ट मीटर से 5 वोल्ट्स। दैट मीन्स आर एक्स का वैल्यू कितना है, आर एक्स विल बी इक्वल टू वी बाई आई सी ओनली। ओके, सो V इज इक्वल टू से वोल्ट मीटर ने मेजर किया है 5 वोल्ट्स और करंट इसके थ्रू जा रहा है 1 मिली एम्पेयर्स। दैट मीन्स आर एक्स का वैल्यू कितना है, आर एक्स विल बी इक्वल टू 5 किलो ओम्स। दैट मीन्स यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 5 किलो ओम्स है। अगर हमारा वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है से 3 वोल्ट्स, इसने 3 वोल्ट्स मेजर किया, सो आर एक्स का वैल्यू कितना होगा, आर एक्स का वैल्यू होगा 3 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 1 मिली एम्पेयर्स की करंट जा रही है इसमें से, यानी कि 3 किलो ओम्स। से ये है 1 2 3 4 और 5 वोल्ट्स। 3 वोल्ट्स पे 3 किलो ओम्स होगी, 4 वोल्ट्स पे 4 किलो ओम्स होगी, 2 वोल्ट्स पे 2 किलो ओम्स होगी, 1 ओम पे 1 वोल्ट पे 1 किलो ओम्स होगी। सो द स्केल ऑफ योर ओम मीटर इज लीनियर। सो आवर पर्पस इज सॉल्व्ड। प्रीवियसली हमारे पास क्या होता था, इस वैल्यू, इस रेंज में इन्फिनिट वैल्यूज़ होती थी, अब इसमें इन्फिनिट वैल्यूज़ नहीं है, हमारा स्केल जो है वो लीनियर है। अगर 0 से 5 वोल्ट्स का है तो ये मेजर कर रहा है 0 से 5 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस। अगर से हमारा वोल्ट मीटर 0 से 25 वोल्ट्स तक की रेंज का है तो ये 25 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस मेजर करेगा, ओनली इफ़ योर आई सी इज़ इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर्स। अब हम इस रेजिस्टेंस की रेंज कैसे, इस ओम मीटर की रेंज कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, 2 तरीके हैं। एक ऑलरेडी बोल चुकी हूँ, जो ही वोल्ट मीटर की रेंज इंक्रीज़ हो जाएगी उसी के साथ हमारी ओम मीटर की रेंज भी इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे ताकि आई ई चेंज हो जाए, उसके साथ साथ हमारी ओम मीटर की रेंज भी चेंज हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ पे 1 मिली एम्पेयर अभी जा रहा है, ठीक है, अगर यहाँ पे 100 माइक्रो एम्पेयर्स जाएगा इंस्टेड ऑफ, अगर हम आर ई को ऐसे सिलेक्ट करते हैं कि हमारे आई ई जो है वो होगा से 100 माइक्रो एम्पेयर्स, सो इन दैट केस आई सी भी कितना होगा, 100 माइक्रो एम्पेयर्स। सो अगर वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है 5 वोल्ट्स तो 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 100 माइक्रो एम्पेयर्स, ये आपको देगा 50 किलो ओम्स, यानी कि हमारी रेंज इंक्रीज हो गई। 5 वोल्ट्स जब यहाँ पे होगा तो ये हमें 50 ओम्स मेजर करेगा। ऑल्सो हम इसकी रेंज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। तो हम इस टाइम पे अगर पहले वो हमारा मेजर कर रहा था सेम 0 to 5 वोल्ट्स मेजर कर रहा था, पहले जब 1 मिली एम्पेयर की करंट जा रही है तो ये हमारे पास मैक्सिमम 5 किलो ओम्स दिखाएगा। जब 100 माइक्रो एम्पेयर की करंट जाएगी तो 50 किलो ओम की रेंज हो जाएगी। से अगर इसमें इससे भी ज़्यादा कम से करंट पास करेगी तो अकॉर्डिंगली जो हमारी रेंज है दैट विल बी मोर। ओके, सो से 10 माइक्रो एम्पेयर्स अगर जा रही है तो ये हमारे पास 500 के
लेगा एंड लाइक दैट। सो जैसे ही हम इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस चेंज करते हैं, और रेजिस्टेंस चेंज करने के बाद हमें कॉन्स्टेंटली वो चेंज नहीं करनी है, वी हैव टू सेट अ पर्टिकुलर वैल्यू जिसकी वजह से हमारा आई ई कॉन्स्टेंट रहेगा, वो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगा। उसके बाद वही करंट आई सी के थ्रू पास हो जाएगा। वोल्ट मीटर जो है वो मेजर करेगा वोल्टेज, करंट हमें ऑलरेडी पता है कितना हो रहा है, उसी फैक्टर से हम वोल्ट मीटर के स्केल को मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास एक लीनियर ओम मीटर बनेगा, रादर देन जो पीछे हम नॉन लीनियर ओम मीटर्स देख चुके हैं। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक ओम मीटर, वाई? बिकॉज इट यूजेस transistors which can amplify the signals. Also, since the scale of the ohm meter is linear, it is a linear electronic ohm meter, and this is what is generally used in laboratories. Now after that we come to AC electronic voltmeters. I hope the previous topics are clear. If in case there is any doubt or you need a doubt clearance sessions, please let me know and we will have a doubt clearance session in between. So coming to the next topic, which is our AC electronic voltmeter. So AC electronic voltmeter. Previously, we have studied about the operational amplifier voltage follower voltmeter, which is actually a DC instrument. Connecting a rectifier in series with the meter of this instrument will convert it into a half-wave rectifier voltmeter. The output of the voltage follower is exactly the same as the input, so the voltage fed to the meter circuit is simply the half-wave rectified version of the input. I will show you with the help of the circuit diagram. Say previously हमने एक operational amplifier voltmeter बनाया जिसके नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे हम वो वोल्टेज देंगे जो हमें मेजर करवानी है, ठीक है। इसका जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं, सो जो भी इनपुट दोगे वो आउटपुट पे आएगा। ये यूजुअली डीसी है। नाउ अगर हम इसके साथ सीरीज में एक रेक्टिफायर लगाते हैं उस केस में, और आफ्टर दैट वी आर यूजिंग अ मीटर सर्किट ऑब्वियसली, तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, जो हमारा मीटर है, हमारा जो यहाँ तक जो इनपुट आ रहा था से ये एसी है, ठीक है। जब यहाँ तक यहाँ पे इनपुट आएगा सो दैट विल बी रेक्टिफाइड इनपुट, okay, and here you will have the voltage which you can measure. The only difference here, or the only defect that this voltmeter is having, is that there will be a drop of 0.7 volts. Obviously, if this is a silicon diode, if there is a germanium diode, there will be a drop of 0.3 volts. से यहाँ पे अगर E voltage है जिसका पीक से EB है, so this is EB, ओके। सो यहाँ पे जो आपके पास आउटपुट आएगा आफ्टर द रेक्टिफिकेशन, दैट विल बी EB माइनस 0.7 वोल्ट। सो ऑब्वियसली आपके वोल्ट मीटर में एरर होगा 0.7 वोल्ट्स का, okay, so which you do not of course want. So what we need to do is that we need, if what we can do to modify that circuit so that there is no drop of this 0.7 volts. So what we can do is we can insert this diode here in the loop of this operational amplifier. So when that is the case, there will be no drop. Like here, if this is input, यहाँ पे peak आ रहा है EB, नेगेटिव फीडबैक में और वोल्टेज फॉलोवर में हमें पता है जो इनपुट पे आ रहा है वही आउटपुट पे आ रहा है। सो यहाँ पे भी आपके पास यही वेव फॉर्म आएगी विद द पीक ऑफ EB, लेकिन जब डायोड से पास हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप होता है इस पे 0.7 वोल्ट्स का, तो वो इसमें भी शो हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इसको इस लूप के अंदर कंसिडर करते हैं, से इन्वर्टिंग पे हमने फीडबैक कनेक्ट किया, लेकिन हमने इस बारी डायोड जो है वो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर की लूप में लिया है और उसके बाद हमने इसके साथ कनेक्ट किया है हमारा PMMC सर्किट या फिर मीटर जो हमारी वोल्टेज मेजर करेगा आउटपुट पे। हम इनपुट देते हैं E,
यहाँ से जो एक साइन वेव है जिसका पीक है से फॉर एग्जाम्पल EB. So in that case, okay, so here this is the negative terminal plus VCC minus VEE, same was here, plus VCC and minus VEE. Okay, so this is the diode. Now obviously when the positive cycle is coming from here, okay, यहाँ पे हमारे पास इधर इस पॉइंट पे भी, इसे एक्स पॉइंट पे भी आता था पॉजिटिव एंड नेगेटिव. सो पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड कंडक्ट करेगा और 0.7 का ड्रॉप होगा. नेगेटिव के लिए वो कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट होगा और ये हमारे पास एक लैप्स आएगा. सिमिलरली अगले साइकिल के लिए भी होगा, लेकिन हम बोलते हैं इस वाले सर्किट में जो है हमारे पास ड्रॉप नहीं होगा. इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्रिसिशन रेक्टिफायर. किस वाले पोर्शन को? जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इसको वी कॉल इट प्रिसिशन रेक्टिफायर, या फिर हम इसको आइडियल डायोड भी बोलते हैं. दैट मीन्स अ डायोड विद नो ड्रॉप एट ऑल. ओके, दिस पार्ट. व्हाई इज इट कॉल्ड सो? यू विल अंडरस्टैंड इन अ बिट. सो नाउ व्हाट हैपन्स इज, so what happens for a positive half cycle? I will consider only this precision rectifier part. voltage आपको पता है ये डायरेक्टली कैसे मेजर करेगा. हमें सिर्फ दिखाना ये है कि यहाँ पे 0.7 वोल्ट का जो एरर आता है प्रीवियस केस में, वो इस केस में नहीं आएगा. नाउ से द सेम रेक्टिफायर आई एम ड्राइंग. ओके, सो यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे रहे हैं E with respect to the, okay, so now here during the, say we are considering a positive cycle is coming. During the positive cycle what happens is, the same goes to the meter now. Okay, now what happens during the positive cycle? positive आएगा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे. ये है नेगेटिव फीडबैक नॉन इन्वर्टिंग मोड ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर. सो जब पॉजिटिव इनपुट जाएगा यहाँ पे भी पॉजिटिव आएगा. जब ये पॉजिटिव होगा ये फॉरवर्ड बायस होगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप होगा 0.7 वोल्ट्स का. लेकिन ये लूप कंटिन्यू है. ये लूप अगर कंटिन्यू है दैट मीन्स व्हाट हैपन्स हियर इज नेगेटिव फीडबैक है. नेगेटिव फीडबैक के केस में हम क्या बोलते हैं? V पॉजिटिव इज इक्वल टू V नेगेटिव. दैट मीन्स वट एवर इज द वोल्टेज एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल द सेम इज द वोल्टेज एट इन्वर्टिंग टर्मिनल. ओके, सो अगर यहाँ पे E आ रही है जिसका पीक है से EB, तो इस पे भी जो वोल्टेज, दे आर वर्चुअली शॉर्टेड. द टू टर्मिनल्स आर वर्चुअली शॉर्टेड टुगेदर. सो दैट मीन्स जो वोल्टेज यहाँ आ रही है सेम यहाँ पे आ रही है, यानी कि यहाँ पे भी वोल्टेज आएगी ये जिसकी पीक है AB, और वही जाएगी EB, सॉरी, जो जाएगी हमारे मीटर सर्किट के पास. ओके, अब नेक्स्ट केस में क्या होगा? जब हमारे पास आ रहा है नेगेटिव साइकिल. ठीक है, ये आया हमारे पास नेगेटिव साइकिल. जो ही नेगेटिव साइकिल आया, इनपुट यहाँ पे नेगेटिव आया, आउटपुट आएगा नेगेटिव. जब आउटपुट नेगेटिव आया ये डायोड हो गया ओपन सर्किट. जब ओपन सर्किट हो गया ये लूप हो गई ब्रेक. लूप जब ब्रेक हो गई ऑब्वियसली दैट मीन्स यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो मीटर, क्योंकि ओपन सर्किट है तो ऑब्वियसली मीटर हमारा रीड करेगा 0. सो फॉर पॉजिटिव साइकिल पॉजिटिव पीक आएगी, नेगेटिव के लिए 0 आएगी. अगेन दूसरे पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव वेव आएगी. सो दिस इज 0. पीछे वाले केस में पॉजिटिव आई थी, इस वाले केस में अब 0 आएगी. Because of this open circuit this feedback loop breaks. Since feedback loop breaks, उस केस में ये दोनों वर्चुअली शॉर्टेड नहीं होंगे. लूप ब्रेक हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे आएगी वो 0 आएगी. So this is how it is a precision rectifier, or we also have said that it is called as an ideal diode because there is no drop of 0.7 या फिर 0.3 volts या कितना भी volts जो होगा सिलिकॉन के केस में, जर्मेनियम के केस में. इवन अगर टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है उस केस में भी जो
हम वी कैन नॉट से लाइक अगर कांस्टेंट 0.7 वोल्ट्स ही खाली से इसके अक्रॉस डायोड के अक्रॉस ड्रॉप होता तो से हमारा वोल्ट मीटर जो अगर है 0 से 5 वोल्ट्स तक मेजर करता, तो हम हर किसी में से 0.7 वोल्ट जो है हर किसी रीडिंग में से निकाल लेते। से अगर 5 वोल्ट्स मेजर कर रहा है तो हम 4.3 कंसिडर करेंगे, ठीक है। सॉरी ड्रॉप हो रहा है तो इसमें हम ऐड करेंगे, तो इसका मतलब है जब ये 5 वोल्ट्स दिखा रहा है तो एक्चुअली वोल्टेज 5.7 वोल्ट्स है, जब ये 4.3 दिखा रहा है तो एक्चुअली वोल्टेज जो है वो 5 वोल्ट्स है, तो ये करेक्ट होगा। बट क्या होता है यूजुअली हमें पता भी नहीं है डायोड जो इसके अंदर लगा हुआ है वो सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, तो उस केस में भी प्रॉब्लम होती है। टेम्परेचर चेंज हो जाता है, उस केस में भी जो हमारा ड्रॉप है वो चेंज हो जाता है। सो दिस डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट, दैट इज़ वाई वी नीड टू get onto this circuit where we use a rectifier inside of the loop. Because of this getting inside, there is no drop of 0.7 volts, because in the negative feedback these two terminals, when this loop is there, this is virtually shorted, so whatever is the input the same will be the output. It doesn't matter यहाँ पे आपका rectifier कितना drop दिखा रहा है, क्योंकि ये this is a voltage follower, so whatever is the input the output is going to follow it. इसके बाद डायोड नहीं लगा, डायोड इस लूप के पहले ही लगा हुआ है, इसके लिए इसमें 0.7 या कितने का भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। सो एरर की अनसर्टेनिटी इसमें नहीं है। सो दिस इज़ वाई वी यूज़ दिस टाइप ऑफ अ सर्किट, एंड दिस कैन बी यूज टू मेजर AC voltages. So the circuit which has this as a part, that is called as AC rectifier electronic voltmeter. So this was the last part of our today's lecture where we studied about the AC electronic voltmeters. We'll get to further parts of it in the next lecture. Till then, take care. Thank you so much.